हेलो एंड वेलकम टू रिफ स्क्रिप्ट प्रेजेंट्स ऑल फिंगर्स एंड थम्स। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, जैसे कि हमारे सारे एपिसोड्स होते हैं। लेकिन आज आप जैसे देख सकते हैं हमारे जो को होस्ट है वो आज थोड़े अलग है, क्योंकि आज का टॉपिक भी थोड़ा अलग है। आवर को होस्ट फॉर टुडे इज पल्लव झवेरी, एंड थैंक्स टू हिम कि वो आज भी अभी भी मतलब रात के 1:30 बजे वहां पर यूएस में है, और फिर भी हमारे ये पॉडकास्ट के लिए वो अभी सोए नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। It's my pleasure. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम दोनों के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा है कि डेथ और सेंस ऑफ लॉस हर एक की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट। लेकिन फिर भी हम उसके साथ कैसे डील करना हमें नहीं पता। हमको किसी ने सिखाया नहीं, और हम हमेशा एस्केप करते हैं वो सेंस ऑफ लॉस को। हम कभी भी ग्रीव नहीं करते। वी आर टॉट नॉट टू ग्रीव। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, राइट। हमें कभी वल्नरेबल बनना नहीं सिखाया किसी ने। तो हमने सोचा कि कोई ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं कि जो सबके लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसके साथ डील कर पाते हैं। तो आपका ग्रीफ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पल्ला? ग्रीफ के लिए मैं बोलूँ तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है. इट्स सैडनेस to someone's death. So something that we all fear as humans is death. Not only our death, but किसी और का भी डेथ हो तो हम उसका फियर करते हैं. हम उस पे लॉस पे हम लोग ज्यादा सैड हो जाते हैं किसी की लॉस पे. तो दैट्स व्हाट ग्रीफ इज. एंड ओवरऑल हम लोग क्या है कि हम लोग काफी तरीके से इवॉल्व हुए एज ह्यूमन बीइंग्स. वी हैव एक्चुअली made a lot of things easier for us using tools and technologies, and we are still evolving with those things. But one thing we are not evolving is in terms of how to handle our psychological mind when it comes to grief. ट्रू। उसमें काफी लोग पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से people are like getting affected mentally as well as physically. करेक्ट। आई थिंक या तो ये एक टॉपिक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स फैसिनेटिंग फॉर मी. तो मैं इसीलिए रात को 1:30 बजे तक जगा हूँ यहाँ पे बात करने के लिए. ये हमारे जो गेस्ट है, तो हमें भी कोई ऐसा चाहिए जो हमें समझा सके साइकोलॉजिकली ये ग्रीफ जो है ये हमें कहाँ, ये मतलब कहाँ पे टच करता है इनर सोल, और हम लोग कहाँ से उससे डील कर सके कैसे. तो यही चीज है जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ बैठा, सीखने के लिए कि क्या आगे हो सकता है. उसमें उसमें मतलब मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है कि डेथ बहुत फैसिनेटिंग चीज है, राइट। कि मुझे हमेशा लगता है कि डेथ का कंसेप्ट अगर हमें पता है, इसलिए हम जो भी रिवॉल्यूशनरी थिंग्स कर पा रहे हैं, जो भी हम इवॉल्व हो पा रहे हैं एज ह्यूमंस, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि डेथ नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। हम सब इमॉर्टल नहीं है, मतलब सबका एक लाइफ स्पान है, राइट। तो वो अगर हमें नहीं पता होता तो हम ये जो मतलब बहुत टूल्स टेक्नोलॉजीज की अभी आपने बात की, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते, राइट। लेकिन वल्नरेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ हमने कभी सीखा ही नहीं कि कैसे डील करना है। तो वो सभी चीजों में रिलेट करता है। मतलब कोई भी इमोशन को एक्सप्रेस करना हो, और जहां पर हम थोड़ा वल्नरेबल हो जाए, जहां पर हमारी वो जो वॉल जो होती है, जो हमने बनाई हुई होती है, जो अगर ब्रेक हो जाती है तो वो हमें पसंद नहीं है। और उसमें भी पेंडेमिक जैसा टाइम हो जहां पर बहुत ही लार्ज स्केल पर हमने सेंस ऑफ लॉस को एक्सपीरियंस किया है, तो उसको ऑब्जेक्टिवली और उसको साइकोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि जो खुद एक थेरेपिस्ट है। शी इज अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट प्लस क्लिनिकल hypnotherapist. Her name is Veena Panjwani, and she'll be able to not tell us how to deal with grief and what it exactly means in terms of physiological aspect of our life, and also from the psychological perspective. So let's welcome her and let's get to know more about grief. अभी हम जैसे ग्रीफ के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है कि जब भी हम मतलब मुझे हमेशा लगता है कि अगर डेथ का कंसेप्ट हमें नहीं पता होता तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। मतलब जितना जितना रिवॉल्यूशनरी काम ह्यूमंस ने किया है, टूल्स और टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना, उसको यूटिलाइज करने के बाद ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाना, वो सारी चीजें नहीं हो पाती अगर डेथ का कंसेप्ट जो है वो हमारे साथ नहीं होता, मतलब हमें नहीं पता होता।
कि हमारे पास लिमिटेड लाइफ स्पैन है और उसमें ही हमें जो भी करना है इसमें ही करना है। लेकिन फिर भी ये होता है कि ये जितना कॉमन कंसेप्ट है उतना ही डिफिकल्ट है सबको समझने के लिए, मतलब उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ह्यूमंस इतने सालों से हैं एग्जिस्टेंस में, लेकिन फिर भी आज भी हमें जब डेथ या उसके बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और उसमें खुद की डेथ से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो रहने नहीं वाले ना। लेकिन अगर हमारे आसपास के कोई है जो जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो है या नहीं है, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा वल्नरेबिलिटी वाला पॉइंट आता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हम वल्नरेबिलिटी से इतना डरते क्यों हैं? Vulnerability, the word itself, it says that you are falling short somewhere or weak somewhere. And anything that makes us feel weak or helpless, it causes fear in us. It is a direct threat for us. So yes, any kind of vulnerability would induce the very first response as fear within. See, the thing is, we as humans, we are emotional beings. We are not mechanical. We can be mechanical when we want to, but unlike other animals, other living beings, we are quite emotional. In fact, our consciousness also expands to the extent that it expands because of our inherent capacity to develop certain feelings and emotions with respect to our own experiences. So, to answer your question, Janish, anything that makes us feel helpless, loss of control, that this is something where we won't be able to do anything, and the first emotion that is generated within is fear. So, doesn't matter what kind of vulnerability we are talking about, whether it is something like cooking a new dish. I don't know what the ingredients are, how to cook it, and I will not be as confident in cooking, or driving a vehicle, or in a relationship where I don't know what the other person is thinking. You take this concept to any setting, and you will find that the moment we experience uh, not experience, the moment we perceive that we are losing control, the emotion that is there within us is fear. And you see, when I talk about emotions, that we have 5 innate emotions, and there is one more which is there with us. So we'll say that 6 innate emotions: happiness, sadness, anger, fear, disgust, and surprise. Correct. All of these emotions are very helpful for us. They help us understand the situation and navigate through it without really collecting more data. Imagine a person who is not able to experience emotions, who is not able to perceive emotions. Okay, experience तो हो रहा है लेकिन perceive नहीं हो रहा है. And for such a person to navigate through any social circumstance, to navigate through any relational situation, or even any personal situation, the person will have to go through collecting a lot many answers to the questions: what is happening, and how it will impact me, and what can be done here, what should not be done here, and how that will impact me. So the person is then on the, say, journey of collecting more information just so that he or she can make sense of the situation. But when we talk about emotions, they guide us. They plain simply, like very simply, they tell us, oh, I like it, so I would like to do more of this. I don't like it, so I would like to stay away from this. And this understanding comes from emotions. And in that case, I was talking about the vulnerability and sadness, where you mentioned, why do we feel sad when there is a moment of vulnerability? Sadness is not the only emotion that we may experience. We may experience disgust also, anger also, fear also. All right.
So, well, there is a lot of disbelief also which comes in the moment we are vulnerable. We may say, oh, this is not true. This should have not happened. This, this must not have happened. I may be imagining this. I may be dreaming this. And that level of disbelief. मतलब इरेशनलिटी ओवर पावर कर लेती है ना जब अगर हम वल्नरेबल हो कोई भी सिचुएशन में, तो रैशनल नहीं रह पाते हम लोग. वो इरेशनल है कि नहीं वो कैसे डिसाइड होगा? हम इमोशनल हैं, लेकिन वो इमोशनैलिटी इरेशनल लेवल पे गई है या सिर्फ इमोशनल लेवल पे है, उसका जो डिस्टिंक्शन है वो भी तो हमारे पास है. पर I will not say every emotional reaction as irrational reaction. That is what I'm saying. हाँ, पर वो जो थीन लाइन है वो हम खुद कैसे डिसाइड कर पाएंगे जब हम खुद वल्नरेबल हो? मतलब वो ऑब्जेक्टिवली तो सोच ही नहीं पाएंगे ना. सोच पाते हैं ना, बिल्कुल सोच पाते हैं. The moment we are able to create the understanding within that this is only my thought, this is not reality. So, the moment we disengage from our own thinking, we are able to reflect on and have the distinction. So it is told that कि अगर हम किसी की डेथ पे सैड है और किसी भी इवेंट से हम लोग सैड या हम लोग को जैसा आपने बोला कि फील डिस्गस्ट और एंगर और एनीथिंग, we always told by elders or anyone that please overcome this or शांत हो जा or something like that, so that we just ignore that sadness and we try to overcome that with our regular activities. Correct? So is it how it works, or it's just we are ignoring that emotion and actually we are trying to push the happiness or like make the happiness push and overcome that emotion? So to answer your question, I'll say there are three aspects to this. One aspect is, yes, when someone in the family or in the close vicinity passes away, usually people come up with phrases that it will be all right, or move on, or cope with it, or many a times people say that भगवान की मर्जी थी, या इतना दुखी मत हो, या अभी तो तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जिंदगी है, you focus on your life. From psychological research, it is found that all these statements are not helpful. They are not helpful to a person when they are said, because the person who is experiencing that grief is a higher level emotion as compared to sadness that I will mention here. So when there is a sense of permanent loss, that this cannot be recovered, this loss cannot be recovered, then the emotion that we experience within is grief. It is not merely sadness. Okay, I can really see the impact of time. Your eyes are blinking. Okay, to wake you up. No, these statements are not helpful. They make the person, the grieving person, feel misunderstood or ununderstood. The person feels that आप तो मुझे समझते ही नहीं है, या आप क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि हम दोनों एक डिफरेंट टैंजेंट पे हैं अभी. The one who is suggesting don't feel sad. How can you say this to someone who has just experienced this permanent loss? All right, or something like move on. But how to move on? That is also never prescribed. See, the thing is, the person who is grieving, because for them, this is a moment in their life which they never prepared for. And doesn't matter how much they prepare, it will always fall short. The person who is grieving would need a person in front of whom they can simply express what they are feeling, that intense sadness that they are experiencing within. So I was mentioning that was first aspect of it. Second aspect is carrying on
with everyday activity, routine activities. It is important aspect, but the person who is grieving may not engage in them. And this is where culturally there are very sanctioned periods of grieving. Say, for example, in India, usually for a month, the grieving period is allowed to the family members, and they are not expected to go to a job or socialize or go out of the house or even go out of the room. They are simply let be. That yes, you are in that mourning period and you mourn, आप शोक मना रहे हैं, और उस शोक मनाने के लिए आपको उतना टाइम गिवन है that yes, you please do it. This mourning period is very, very significant. In fact, in Gujarat, there is a social practice of organizing Desna, wherein after someone's passing away, the family organizes a social level gathering where all the acquaintances, friends, relatives, they can come and they can pay their tribute, and they can sit in peace, and they can leave without interacting much. And that is very significant in letting the person realize that yes, this has happened, to reach that level of acceptance that yes, this is real. And no, I don't have to behave in a certain manner, or I don't have to engage in certain conversations. I can only be quiet, and there are so many other people around who are here to be quiet with me, to sit in silence with me. And I'll say that it is important not only for the family, it is also important for all those people who knew this person, that they are able to have that last connection, that they are able to reach a place where they could offer their prayers and tribute for the person. In fact, I'll say in different cultures, like I was mentioning, in South America, there is a saying that a person dies, finally dies, when their name is taken the last time. Okay. So you are saying that people like Albert Einstein and Sigmund Freud, they are not dead truly, because they are the people whose names will be taken even after they're going away by generations after generations. But when we are looking at families, when we are looking at everyday ordinary life, we know that the person's immediate family is the one who is remembering the person. So when a person moves on, when a person passes away, it's the immediate family who is mourning for the physical death. Then there is that first generation who knew the family. When that generation is gone, we know that that person's emotional death has taken. But that person's social death, that social passing away happens when it's the third or fourth generation in the same family who remembers that person for the last time. So you will see that death has a very cultural connotation in people's life. The third aspect to your question was, does it help moving on by simply saying move on? No, it does not. It does not help at all. What helps really is being with the person and listening to the person. Even if the person is not saying anything, letting the person
cry, or be silent, just being with the person. Wow. Rather than giving the advices, just listen to Yes, them. That's yes, what it is, right? yes, yes. And you can let your presence known to the person by saying that I can't even imagine what you're going through, but I'm here to listen to you. Or that you can express yourself, I am here. Or simply being with them. There was a time when we did not know language, we still used to Yeah. communicate. We were 1.5 years of age, till we had not learned any language. We used to communicate with our body, we used to communicate with our expressions, and they are very significant here. So when you are sitting with a person, just quietly, perhaps holding their hand, or if even if that is not there, just being there, your physical presence means a lot. Wow. I'm mesmerized right now, but I do have another question. मतलब ये होता है कि अगर नेचुरली अगर कोई ग्रीविंग प्रोसेस में है तो आपने जो बोला कि जस्ट जस्ट टेलिंग देम के मूव ऑन और इससे डील करना सीख लो, वो उससे सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो ग्रीफ को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा लेट, मतलब इवेंट अगर आज हो रही है और मुझे वो उसका रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है, तो उस पर्सपेक्टिव में मॉर्निंग कितना इम्पैक्टफुल होता है, और मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है वो एस्पेक्ट, अगर टू ग्रीव इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ग्रीव। It is very important to grieve. See, the thing is, earlier, before COVID, देयर यूज्ड टू बी अ सेटअप जहाँ पे अगर किसी का डेथ हो गया है तो उसके बाद फैमिली में लोग मिलने आते थे, रिश्तेदार आते थे, सब लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और सब लोग साथ में ग्रीव करते थे। और वो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन बहुत हेल्प करता था, बहुत सूदिंग था। जैसा मैंने अभी बोला कि आपको बहुत सारा कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग, एज लॉन्ग एज यू आर देयर, इट इज कन्वेइंग योर मैसेज। लेकिन ड्यू टू कोविड व्हाट इज हैपनिंग इज लास्ट दर्शन नहीं हो पाता, जो नेबर्स हैं, फैमिली हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, घर पे आप गैदरिंग नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। सो वो मिलना जुलना नहीं हो पाता, बातचीत जो होती थी वो नहीं हो पाती, एक दूसरे को देखना नहीं हो पाता। लेकिन ये प्रोसेस में योर क्वेश्चन वाज स्लाइटली डिफरेंट व्हेन यू सेड कि कोई अगर ज्यादा टाइम ले रहा है रियलाइज करने में और ग्रीव करने में। सी, जब आप मिलते अब इतने सारे लोगों से आपको पता चलता है कि ओके दिस हैज रियली हैपेंड, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग टू मॉर्न, आपका जो एक्सेप्टेंस है दैट दिस इज रियलिटी वो बहुत जल्दी आ जाता है, यू रियलाइज इट सूनर, बट that does not mean that you stay with that realization. There are various stages मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन various emotions that we experience when we are grieving. There is disbelief कि ऐसा हो ही नहीं सकता, there also comes bargain कि कुछ भी करके उनको वापस लेके आओ, हमें वो चाहिए, हम उनके बिना जी ही नहीं सकते, या अब काश हमने ऐसा किया होता तो ये नहीं हुआ होता, शायद हम ज्यादा प्रे कर लेते, हम ज्यादा अटेंटिव हो जाते तो शायद ये नहीं होता। तो ब्लेम भी आता है, ब्लेम के साथ एंगर भी आता है। तो आपने देखा होगा कि there were so many people who were angry on doctors and hospitals for Yes. The relatives passing away, especially in COVID. And the reality is that anger also is part of grieving process. It is not coming from any misplaced emotion within. It is part of grieving process, जहाँ पे हमें blame करने के लिए कोई चाहिए। Oh, say for example, you see when someone passes away due to cancer, or someone passes away due to say
some accident, typically there comes a very strong blame that because of the illness they passed away. So in case of cancer, the blame is going to the illness. But in case of an accident, the blame goes on, well, how did the accident take place? Was it the driver's fault, or was it somebody else's fault? And that is where there happens to be a lot of discussion about who is to be blamed. And that also is part of the grieving process. Okay, so yes, there is disbelief, there is sadness, there is blame, there is anger, there is bargaining, there is also acceptance that this has happened, this is reality now, अब उनके बिना जीना होगा. ऑलराइट, और वहां पे ये एक मैसेज दैट उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता. हम आपका दुख समझ सकते हैं, कुछ भी करके उनको वापस नहीं लाया जा सकता. And you are allowed to feel sad or grieve. And what happens is, many a times a person who is grieving, they repeat one thing again and again and again and again. So जो भी आता है, जितने भी लोग आते हैं, सबसे सेम स्टोरी वो शेयर करते हैं कि ऐसा हुआ था, वो तो ऐसा भी बोलते थे, ऐसा भी करते थे. और उनके आसपास के जो लोग हैं वो ये सोचें कि बोल तो चुके, और कितनी बार बोलना है. लेकिन उनका जो सैडनेस है, अगर उसे अंडरस्टैंड करना है तो आपको उन्हें बोलने देना होगा that it is okay for you to repeat, and it is okay for you to repeat as many times as you want. It is not okay to suppress an emotion. Yeah. So that's yes. also a part of grieving, right? Grieving process. Yes. Healing. Yes, it is. आपने अभी जो बोला ना, वो राम प्रसाद की 13वीं जो मैंने मूवी देखी थी, उसमें बहुत ही सटल वे में बताया था कि सुप्रिया पाठक जो है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जितने भी लोग घर पे आते हैं ना, सबको वो एग्जैक्ट सेम स्टोरी के किस तरह से कैसे इवेंट्स हुई जो जिसकी वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो वो बहुत ही सटल वे में, आपने जो बोला ना, बहुत ही सटल वे में बताया कि बार बार वो रिपीट किए जा रही है जब भी कोई पूछता है उनसे. वो चीज समझ नहीं आती किसी को अगर मूवी देखते हैं, बट अगर ये अंडरस्टैंड किया कि ये भी एक ग्रीविंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि मूवी में ऐसे ही दिखाया गया है. आई थिंक वो एक सोच समझ के उन्होंने दिखाया गया होगा कि राइट हर बार लोग ऐसे रोते नहीं है जोर जोर से. दिस इज आल्सो हाउ दे express their emotions. Right. And also, Pallav, in the previous question that you asked, the last aspect was that no, it does not help to suppress the emotion of sadness. आपने उसे अभी सप्रेस कर दिया, मान लो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, आप अभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, प्रोसेस नहीं कर पाए, और आपने उसे सप्रेस कर दिया. यू मूव्ड ऑन विद योर लाइफ, यू स्टार्टेड डूइंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड. यस, दैट हेल्प्स, बट that emotion is going to come back to you, or it stays with you. I remember a person who grieved passing away of her grandfather 3 years after the event. That when she experienced trance for the first time, all that she did was she grieved for her grandfather. I know another person who grieved passing away of her husband. It happened due to cancer, but she was aware that this is going to happen, and in the same month her father also passed away. So first her father is passing away, then her husband's passing away, and she had a young daughter to take care of, and she devoted all her energy, all her attention to bring her up. And here she was, almost 6 years later, dealing with translated, they stay with us in our body and they are suppressed. So that is another aspect. We are perhaps we can talk about it later, but coming back to this, when she experienced trance and when she did saying the final goodbye, letting her sadness expressed and
expressing whatever she wanted to with the passing away of her father and her husband. And you would see the transformation that a person experiences. She was free from all physical pains and the continuous giddiness that she was experiencing, for which she had come to me. That in one session she had that recovery. And many a times people wonder, even doctors ask, that how is it possible that in just one session, yeah, just 1 hour of work, and there is so much of recovery in a person? But it is true. We don't realize how powerful our mind is. And if we are able to understand our emotions and process them, then we are able to live a healthy life, very healthy life, physically, mentally, and emotionally. But if somewhere we are suppressing them, if we are not paying attention to them, if we are not processing them, then we are perhaps um, giving rise to some or the other physical or mental health issue. Yeah, but also there is something called complicated grief. I had read about it. Something called So it's complicated grief, where actually you grieve for complicated grief. longer period, yeah, longer period of time. Like Hmm. what Janice told, it was a grief where you don't grieve for a certain period of time and then you start grieving, right? But Hmm. in this, you grieve from from the point of death, and it's a year, 2 years, and they get into all these some substances or some kind of activities which they think that will really like reveal them, relieve them from these Hmm. emotions, but they cannot Hmm. get relieved, and they So it is already, not processing yeah, their emotion. Yes. yeah, correct. So do like have you studied about it, or have you encountered anyone with these kind of cases? Yes, actually, I will say this, that when a person is not processing the emotion, when they are not willing to experience them, when they are trying to create a distance within the self and the emotion that they are experiencing, they may go on various routes, and they may go for various substance abuses or different kind of experiences. But none of this helps in processing the emotion. The person is only making himself or herself vulnerable for a substance abuse disorder or any other kind of physical health risk. See, there is no escape to hunger, there is no escape to sleep, there is no escape to thirst. Similarly, there is no escape to processing one's own emotions. Doesn't matter how pleasant they are, doesn't matter how unpleasant they are. As I mentioned, our emotions are guiding lights for us. It's like emotions, energy in motion for humans. We get energy with our emotions. We also Yeah, experience loss of energy with certain emotions. And if we are not understanding this impact on our own self, we are only bound to create more distance within the self. And it is not helping anyone, not the self, not the people around. Wow. yeah, So, also to give you an example, I know a person who developed alcoholism or alcohol dependence disorder after passing away of his father. That he did not talk about his relationship with his father. He only focused upon अच्छा वो तो चले गए अब तो मुझे यही करना है, and he would cope with his sadness by drinking alcohol. And anytime he would feel sad, he would say that, oh, I don't want to feel sad. And he would go open a bottle and sit with a drink. And well, 6 months later, we are seeing a full alcoholism in him. मतलब एक इश्यू से डील And करने के लिए दूसरा इश्यू yeah. क्रिएट कर लिया. yes, Right. You told that substance abuse is not a solution, and so hmm, people also grieve with other in other ways, like they express their emotions hmm, and for a longer period of time, कि 3 years हो yes, गए, 4 years हो गए, पर वो वहीं पे है, move on नहीं हुआ है. hmm, तो hmm,
उससे कोप अप करने के लिए दे रिक्वायर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और समथिंग that I read. So how does that help in like to move that person or make that person concentrate on particular tasks? Okay. So this example that I was giving you of the lady who experienced passing away of her father and her husband in the same month, and then she had to focus on something else, and then 6-7 years later she worked on it. So how hypnotherapy works, I will explain that. But before that, individuals who are, because of XYZ reason, who are unable to express their grief, their sadness, they tend to they tend to experience differences in their behavior, as in they may become more angry or impulsive, which is otherwise not a personality characteristic for them, or they may tend to have nightmares or disturbing dreams that they would have otherwise not experienced before. So such behavioral and emotional changes do take place. Now, in hypnotherapy, what happens is we are talking about various levels of mind, consciousness, and yes, when we are awake, when we are aware, we are in the conscious state of mind. But there are other states of mind like subconscious, unconscious. There is also sleep stage. So these are various states of our own mind. And when we are able to communicate with the subconscious or unconscious mind, that state is known as trance. So in a trance state, or in a hypnosis state, the person is given certain therapeutic suggestions or visualizations wherein they are able to express the suppressed emotion. And even though they are not doing it consciously, but it is actively done by their own mind, the larger part of their mind. And that is how they are able to process and overcome the emotion of grief or any other suppressed emotion. So there could be, say, anger suppressed or resentment or fear that can also be resolved. Now, clinical hypnotherapy particularly is suggested because of this possibility of expressing whatever is held within as a block. Correct. So it's like it's one of the solution for overcoming your grief. It can be told like that. One of the solutions, yes, yes. Yeah, that's great. मुझे It's not overcoming grief; it is expressing grief, processing grief. Okay. See, there is, and in the past 1 decade, almost 12 years of research in grief, and now they are saying that the initial model given by Kubler and Ross about the model of grief, wherein they are talking about stages of grief, that no one overcomes grief or no one overcomes the sense of loss, but people move on in their life with the sense of loss. So when we are talking about acceptance, it is not leaving behind something. It is acknowledging that it happened, and now along with this loss, we are living our life. Yeah. तो मतलब मुझे एक और क्वेश्चन है, वो भी अगेन मूवी से ही मैं कंटेक्स्ट उसका लूंगा। राम प्रसाद की 13वीं में एक और चीज है जो मैंने लिखी भी थी कि उसमें जनरली मतलब सभी फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर किसी कोई भी इफ समवन हैज पास्ड अवे और सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं तो प्रोसेस सारी इस तरह शिफ्ट हो जाती है कि जो भी हमने 12वीं 13वीं जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें कि कैसा खाना बनेगा,
क्या रखेंगे, मतलब मेहमान जो भी आएंगे घर पे बैठने के लिए उनके लिए चाय नाश्ते का क्या करेंगे। तो सारा फोकस जो है वो रूटीन पे चला जाता है, जो मंडेन टास्क है उस पर चला जाता है। तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर या फिर जो सबसे क्लोजेस्ट है, तो उनके लिए वो ग्रीविंग का प्रोसेस पूरा डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो आपको शिफ्ट कर रहा हो थॉट प्रोसेस से, जो आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और सब लोग एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे रूटीन में हम लोग नेविगेट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, मतलब उसका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? सो वन, यूजुअली ऐसा होता है कि टास्क में शिफ्ट होते हो, वो आप इसलिए शिफ्ट होते हो क्योंकि वो टास्क आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल है अभी। फॉर एग्जाम्पल, there is a lady whose husband has passed away and she is grieving, she is mourning, she is experiencing that intense sadness within, but she also sees her children who are hungry. Will she not get up and cook for them? Will she not arrange food? She will. And that one task itself will give her a break from her intense sadness, and she'll be able to think about something else. She will be able to generate another task in her consciousness of which she can divulge her energy. And that helps a person in processing the loss that they have experienced. Okay. Typically, what happens is, I'm not referring to this pandemic era, but before pandemic, uh, if there is a loss in a family, that family would not cook. ठीक है, ऐसा बोलते हैं कल्चरली कि चूल्हा नहीं जलाते हैं, पर क्यों नहीं जला रहे, क्या रेलेवेंस है उसका, सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सिंपल है कि आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, दे विल कुक, दे विल मेक टी, दे विल ब्रिंग इट, so that you are let to grieve, so that you are able to be with your emotions. Okay. And after initial say 7-10 days or initial 12 days, then happens to be the day when you start cooking again, that you are slowly shifting your attention from the loss to immediate responsibility, which are of value again. Right. Yeah. एक और चीज मतलब मेरे दिमाग में आती है कि मतलब अक्टूबर जो मूवी थी, मतलब इट वाज क्वाइट मूविंग, और उसमें डेथ का बहुत सिग्निफिकेंस है। उसमें डीप सेंस ऑफ कनेक्शन जो है वो वरुण धवन का कैरेक्टर जो है वो जो एक्ट्रेस है उसके कैरेक्टर से फील करता है, जब वो सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन सुनता है कि भाई उसने ऐसा पूछा था कि वेयर इज डैन। तो उसके बाद क्या होता है कि वो नहीं रहती, तो उसकी फैमिली जो है, उसकी मदर और उसके भाई बहन जो है, वो लोग शहर छोड़ देते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर अब नहीं रहेंगे और हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जो वरुण धवन का कैरेक्टर जो है वो पहले जो इनसिंसियर था, जिसको नहीं फर्क पड़ रहा था कि काम मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, कोई गोल नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी उसके पास, लेकिन जैसे ही उसने ये फील किया, ये एक्सपीरियंस किया, डीप सेंस ऑफ कनेक्शन प्लस सेंस ऑफ लॉस दोनों एक साथ हुए, तो फिर उसके बाद वो उसका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो बहुत ही सिंसियरली अपने काम को अप्रोच कर रहा है, वो शिमला या कहीं पर शिफ्ट होके काम कर रहा है होटल इंडस्ट्री में। प्लस उसके साथ एक्ट्रेस की फैमिली भी जो है वो भी बहुत अच्छे से मतलब कनेक्टेड है, मतलब क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहा है पूरी प्रोसेस में। तो मुझे ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब ये कैसे कनेक्शन हो सकता है कि आप डीप सेंस ऑफ कनेक्शन फील करो किसी के जाने के बाद, और उससे आपकी लाइफ में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो। मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता होगा। Yes, होता है, no doubt. And this is one way through which we keep the person alive within us. जो भी व्यक्ति गया, उनमें आपने कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई की और उस वैल्यू को आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लेते हो।
That is one way of processing through the sense of permanent loss. And not, I'll say that उस movie में बहुत beautifully उन्होंने दिखाया है, but otherwise also there are so many people who have dedicated their lives cause to house or who has died, and they learned what was most valuable in that person's life, and they kept it alive through their own life. So, well, I know a person. I don't know why today a lot many examples are coming from cancer, but yes, there is a person who lost her child to cancer, and later on, the person is running an NGO, working for creating awareness and helping the cancer patients and cancer survivors both, building that community. So something that we see of value in that person, we take it and we practice it in our life. We tend to keep uh, the passed away person, the person who is no more with us. We tend to keep them alive within us by engaging in the same values that they lived their life with, or what was important in their life. So it is one of the ways, very significant ways, through which we can lead our own life. Yeah. So there is an old anecdote between a person who says that I don't want to deal with loss, so I don't want to experience loss at all. So the Yamraj who comes, he says, okay, you go and give this to someone who, in a house where there has been no death. And that person keeps on searching for such a house for 3 days, 3 nights, and then returns back and tells to Yamraj that, oh, I did not find any single house where there has been no death. So death is a reality. It is going to happen. It is bound to happen. And another aspect is when do we conceptualize, understand about death and dying? At what age? That is also significant. I have come across many people who, for the very first time in their life, experienced death in their family or close person's life in their early childhood or mid childhood. So I'm referring to 3 years to 7 years of age. And such a person has a, a very different outlook towards life and death as compared to a person who comes across death as a reality in their adolescent years. And their coping is very different. So I would say that I was referring to loss of control and sense of helplessness. These two emotions, they create fear and hence anxiety within us. And when we have not experienced or understood the reality of death at an early age, when or we have not processed the encounter with it, then it may stay with us for a longer time. So, Pallav, you were referring to complicated grief. There is also something like complex PTSD, post-traumatic stress disorder. Now, in psychology, a disorder like PTSD or acute stress disorder (ASD) is diagnosed after a certain time frame, that 3 months after the event or 6 months after the event. If the person is still showing same symptoms, then the person is diagnosed with a, PTSD or acute stress disorder. Two different diagnoses, but a person who experienced death so closely at very early on and later on did not develop very direct symptoms of PTSD,
like nightmares or immediate recall, going into anxiety, physical symptoms. But the person did it years later, say 7 years later, 10 years later. And now suddenly the person is saying, why am I getting so anxious? There is no reason for me to experience this. And you are, in general, able to trace it back to an earlier event that at that time something like this had happened. And you had really not processed the emotions. You had perhaps ignored it or diverted yourself from away from it. That now you are getting them as a form of symptom within the body. So when I say that it is important to process grief, and for that matter, every emotion that we experience, it keeps us healthy. It keeps us the processing of emotions. It keeps us more connected within our own self. We are more at ease, more functional. Yeah. So that's what, like, are you talking about the childhood? So we might have experience. We all have experienced somewhere death in our childhood when we're 5, 6 years of age. Hmm. So that's Hmm. what how child psychology deals with that grief, because at that age, we know that something sad has happened. People are crying, Hmm. so we cry. But at Hmm. some moment after that, we sleep, we wake up, Hmm. and everything is gone. Like, what happened, right? Hmm. Hmm. So is that how, like, how a child um, psychology towards grief works मेरे पास एक एग्जांपल है। rather than adult? हाँ, मेरा खुद का एक एग्जांपल है कि जब 2001 में जब अर्थक्वेक आया, तब मेरे नाना जो है ही पास्ड अवे। तब हम 5 साल के थे, मैं और मेरा कजिन। तो घर में जितने भी अडल्ट्स थे, वो सभी लोग दे वर ग्रीविंग। ये लोग प्रोसेस कर रहे थे कि क्या मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, दे वर एब्जॉर्बिंग द फैक्ट, राइट। पर हम दोनों जो थे, क्योंकि हम 5 साल के थे, तो हमारे साथ जितने भी अडल्ट थे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे नॉर्मल सब चल रहा हो। Hmm. और Hmm. हमें उसका इम्पैक्ट पता ही नहीं चला कि किसी की डेथ हो जाना घर में क्या होता है, उसका मीनिंग। वी वर नॉट Hmm. कि हमें उसका इम्पैक्ट ही नहीं पता चला। Hmm. लेकिन बहुत सालों बाद जब मतलब जैसे हम बड़े होते गए, तब रियलाइज हुआ कि वो क्या था, मतलब व्हाट वाज दैट, वो बहुत लेट पता चला हमें। Hmm. क्या वही सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मैं आई वॉज 7 years old, बट Hmm. मैं मेरे ग्रैंडफादर जो है वो पास अवे हो चुके थे। तो वो वक्त ऐसा था कि वो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, मतलब सब वहाँ पे सब लोग आए हुए थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे वो सब, और सब मतलब ऐसे रो रहे थे काइंड ऑफ। तो मुझे भी लगा कि मैंने भी, आई थिंक आई बर्स्टेड आउट, राइट, Hmm. दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे Hmm. सबने शांत कराया और मैं वहां जाके मेरे फ्रेंड के साथ टीवी देखने बैठ गया, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद शांत हो गया। Hmm. और उसके बाद आई थिंक वो एक मोमेंट था, वो वापिस चला गया। तो वो हमारा मतलब एक चाइल्ड का ऐसा होता है कि उसको एक बार ग्रीफ आ गया, फिर वो वापस किसी और चीज में डाइवर्ट हो सकते हैं, आई थिंक। Hmm. और फिर वो वापस इसमें आ सकते हैं। बट एज एंड व्हेन यू ग्रो, यू रियलाइज कि हाँ, ये हाँ। जो है ये लॉस हुआ था हमारे साथ, एक Hmm. ऐसा। Hmm. तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और Yes. यही चीज मैं एज अ टीनेजर जो है वो Hmm. अलग तरीके से एक्सपीरियंस होती है। तो मेरे, आई थिंक यूनिवर्सिटी में, अगर किसी को पता हो तो देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड, एंड देयर वाज अ गाय हु डिड लाइक हु केम विद गन एंड स्टार्टेड शूटिंग इन अ क्लास, राइट। Okay. सो यहाँ पे तो Hmm. बहुत, मतलब यूएस में Hmm. गन्स आर Hmm. लाइक अवेलेबल टू एवरीवन, Legalized, yes. yeah, Hmm. legalized. So जस्ट लाइक that happened, and yeah, 2 people died, and some of them who were not even their friends, they Hmm. also experienced that shock. और Yes. वो शायद बहुत टाइम तक रहा उनको, जो लोग उस क्लास Hmm. में थे उन सबको। आई थिंक वो यूनिवर्सिटी आने से डर रहे होंगे शायद। Hmm. Yes. हाँ। तो इस चीज से कैसे डील करें, लाइक हाउ अ चाइल्ड एंड अ टीनेजर Hmm. ऑफ सेम एज, पर वो शॉक से कैसे डील करना होता है। Hmm. Hmm. Okay. Um, you see, both of you have very clear memory of the loss. या आपके उस एज की और कितनी मेमोरीज हैं?
वैसे तो बहुत सारी है, और कुछ लेकिन याद है उस बहुत एज सारी पर? है, हाँ। ये डिस्टिंक्ट मेमोरी है कि ये हमेशा याद रहेगी, जहन में हमेशा रहेगी। Yes. हाँ, You see, something which is emotional for us, we remember it. We have very strong emotional memory with us. Events we remember as it is because we experienced a very strong emotion in that moment. When children experience grief, it is a faulty practice to tell them that no, everything is okay. If the elders around, if the parents around tell them कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तुम जाओ, तुम कुछ खा लो, तुम सो जाओ, कुछ और कर लो, they are blocking that expression of sadness or the grief within the child. Usually children cope with grief by talking about it or drawing about it. If there is a child who is good with words, then the child may make stories about it, write about it. My suggestion would be that if there is a child who has experienced loss, it would be really nice to give a few colors and a blank page and tell the child to express whatever comes to your mind. And the child will be able to do it beautifully, very, very meaningfully. This is one aspect. It is important to talk to children, ask them how are they feeling. It is important to listen to them and simply trying to understand that what they are experiencing is also completely normal. So there could be a child who may say that मुझे तो दादा चाहिए, मैं तो उन्हीं के साथ खाना खाता था, वो कहाँ चले गए? एंड बहुत ज्यादा फैमिलीज में ये होता है कि वो गए हैं, वो आ जाएंगे, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, कहीं चले गए हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर गिविंग अ फॉल्स सेंस ऑफ होप टू द चाइल्ड, वेर इन द चाइल्ड नोज दैट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न. The child also knows that all of this, the mourning that is happening within the family, is also true, that people are sad, people are crying, and children are very observant. They are very quick to identify a change in emotion, a change in word, a change in intonation, because, well, their entire energy is available in the present. They are not, diverted to a past or a future. And this is where, for children, experiencing an emotion is even more intense. And that is why for them to express an emotion is even more important. I would like to talk about my own son here. He was just 7 years of age when his grandfather passed away. 7.5 years of age. His grandfather passed away due to cancer. In the family, it was known that yes, it is going to happen. And since the entire family, including me, we were so focused on taking care of uh, the grandfather, what happened was he he would spend time with his grandfather, but he would also write about it. And he used to write it to his teacher in his notebook. So, and in his school, they have this activity of writing the details of every day. So it's like writing a diary. So every day, end of the day, they are supposed to write how their day went. So I remember in one of those days, he had written about details of his grandfather and how he's feeling scared and how he doesn't want it to happen, and he's really worried for his grandfather. And you know what his teacher had written? Don't worry, beta, he will return from the hospital, everything will be all right. And next to that, my son had written, no, he will not, in a very strong handwriting. Like I could see how forceful his pencil would have been when he was writing that. And the next day, his grandfather passed away. And well, till then, I had no idea about it, that he is doing this.
to express his emotions. It was only later when we were at home, when I was going through his notebooks, I read about it. I talked to him. And for next few weeks, he did not write that diary note that that I said at end of the day they had to write about how their day was. For next few weeks, he chose not to write it. And I'm talking about a child's understanding, a 7-year-old. What do you think? The 7-year-old is calling on to the lie and is saying that, no, you are lying to me. Everything is not going to be all right. Why is it so important for elders to lie to children and tell them that everything will be all right? And this is where I was saying some of the phrases are not helpful when people say कि अरे सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, टाइम बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा. बट नहीं होता है. और उस मोमेंट पे जब हम बोल रहे होते हैं किसी को, when a person is grieving, वो ज्यादा harmful होता है. It is not helpful. It is more impactful to the person. The person feels that no, you do not understand me. And instead, a simple sentence like, I'm here to listen to you. You can talk more. I'm here for you. This is very helpful for a grieving soul. So for children to deal with the loss, it is important that they express it either in drawing, painting, writing. If it is not happening, they begin to dream about it. And there are so many accounts of children who begin to have nightmares or crying spells also after someone's death in the family. Can we not develop the practice of listening, patient listening, instead of offering a solution, offering a solution or a suggestion? कि ये कर लो, ऐसा कर लो, उसकी जगह पे क्या हम सिर्फ सुन नहीं सकते हैं? हाँ, करेक्ट है, सही बात. मतलब मतलब वो हमेशा ये रहता है कि कोई भी अगर सिर्फ सेंस ऑफ लॉस की बात नहीं, कोई भी फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेंबर आके कुछ बोलता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो सुन रहा है उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू से समथिंग. तो वो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आई एम ऑब्लाइज्ड टू से समथिंग, सो आई टेल समथिंग व्हिच इज क्वाइट कॉमन. जो इसलिए ऐसे फ्रेजेस होते हैं ना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, या फिर ये कर लो वो कर लो, मतलब वो सारी चीजें उनको भी पता ही है, मतलब उन्होंने भी यही चीजें पढ़ी हुई है, देखी हुई है, लेकिन नहीं कर पा रहे, तभी तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना. Adults are always like they want to give advice. No, it is not always. Hold on. ये ऐसा है ना कि आपके साथ इतनी बार होता आया तो आपने सोचा कि ये सही तरीका है और आपने भी उसको रिपीट किया. अगर आपके साथ किसी ने अलग किया होता या आपको कोई अलग जानकारी होती तो फिर आप अलग करना चूज करते हैं ना. बट उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना एक अडल्ट में कि हमें इसको सिर्फ सुनना है, इसको एडवाइस नहीं देनी है. Yes. So this is one. I'm sorry, लेकिन आपने adolescents के लिए भी पूछा था कि when a person gets to know about grief in their adolescent years, processing ही अलग हो जाता है. इसलिए अलग होता है क्योंकि limbic system in our brain, which is responsible for managing emotions, it is fully developed by the time we reach puberty. But the prefrontal cortex, which is responsible for attention, memory, concentration, rational thinking, decision making, judgment, the neural networks in prefrontal cortex are yet developing. That is why in adolescent years, whatever emotions that we experience, they are in higher intensity. Our behavior is also more impulsive. So usually in adolescent years, people are questioning, why am I reacting like this when I don't want to react like this, but I'm still reacting like this. Okay, so they do have a level of understanding कि ये नहीं करना है, पर फिर भी उतना impulsive या emotional response आ रहा है, या intense emotion feel हो रहे हैं. So same way, when there is an emotion, doesn't matter whether pleasant or unpleasant,
emotion is experienced in higher intensity in adolescent years. तो वहां पे तो और भी ज्यादा जरूरत है that the person is able to talk about emotions. That when I say express emotions, I'm not saying express emotions in the emotional way. I'm saying express emotions by means of talking about them, or writing about them, or drawing about them. I mean वो important हो जाता है एक मतलब because एक teenager और just turning adult like 16-17 year they are too unstable in with their emotions. It goes on till Yeah. we reach 21 years of age. The neural networks in our prefrontal cortex, they are fully developed by the time they are 21, 22 years of age. So you see the level of maturity that you only experience within. When you were 18, when you were 16, and when you are 22. You may say that बहुत ज्यादा कुछ तो चेंज हुआ नहीं हमारे लाइफ में, फिर भी हमारा ही लिव्ड एक्सपीरियंस इतना अलग कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन वो रियलिटी क्रिएट कर रहा है. एक्चुअली हम जो अभी बात कर रहे थे कि अलग अलग, जैसे अपने अभी बोला कि लिम्बिक सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है तो टीनेजर्स अलग बिहेव करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी अलग काम करती है. लेकिन मैंने एक और चीज़ भी एक्सपीरियंस की है, मतलब एक्सपीरियंस भी की है और मैंने देखी भी है. एक सीरीज है द मेंटलिस्ट करके, उसमें एक एपिसोड ऐसा है कि उसमें एक एपिसोड ऐसा है कि जो उनके सीबीआई की चीफ जो है, उसके ऊपर जो क्रिमिनल है वो ऐसे बंदूक पे आने खड़ा है, तो उनको ऐसा है कि मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ फियर कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अलाइव फॉर मोर देन दिस मोमेंट, राइट. अब आई एम गॉन, मतलब ऐसे ही उनके दिमाग में फियर है. और तभी उसी मोमेंट पर साइड से आके उनका जो कलीग है वो उस क्रिमिनल को शूट कर देता है. तो वो सडन चेंज है, द सेंस ऑफ फियर कि मैं अभी नहीं रहूंगी, उससे तुरंत शिफ्ट होके वो हो जाता है कि लाइफ के लिए वो ग्रेटिट्यूड फील होने लगता है कि हाँ मैं आई एम अलाइव, आई एम नॉट डेड. तो उसके बाद वो लोग जो उनका डिपार्टमेंट है वो उनको ऐसे अप्रोच करता है कि आप प्लीज यू शुड गो टू थेरेपी, क्योंकि आपने जो ये दो एक्सट्रीम्स को एक्सपीरियंस किया है तो उसको मैनेज करने के लिए यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट, राइट. और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं आज से 3 साल पहले जब मैं कार लेकर आ रहा था एक्सप्रेस वे से, तब जब तक मैं आ रहा था इजी वे में तब कुछ नहीं था, तब सब सही चल रहा था. लेकिन अचानक मतलब वो मोमेंट ही था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और तब मुझे थोड़े टाइम के लिए लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अलाइव, अब ये गया मतलब. और फिर उसके बाद जब गाड़ी से बाहर निकले तब पता चला कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब मैं जिंदा हूँ और मेरे साथ जो दोस्त है मेरे उनको भी कुछ नहीं हुआ है. तो वो भी पूरा ट्रांजिशन था. तो ऐसे दो एक्सट्रीम्स अगर कोई एक्सपीरियंस करता है कोई भी इंसान, तो फिर कैसे मतलब वो फिर नॉर्मल कैसे हो पाता है? क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स को एक साथ महसूस करना और उसके बाद भी नेविगेट करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो वो कैसे हो सकता है? So what do you mean by normal? नॉर्मल मतलब कि जो दोनों को एक्सेप्ट करने के, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स को एक्सेप्ट करने के बाद भी, जैसे मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो पापा को और मम्मी को कॉल किया, तो वो लोग तुरंत बड़ौदा आ गए और मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई ये रखो कार की चाबी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव एनी मोर. और आई वाज क्राइंग क्योंकि मैंने ये पहले मतलब डेथ को इतने नजदीक से कभी नहीं देखा था और पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ. लेकिन फिर भी मतलब थोड़े टाइम के बाद 2-4 महीने निकल जाने के बाद आई एम स्टिल ड्राइविंग. और अभी मैं थोड़े दिन पहले ही वही एक्सप्रेस वे से जाके आया, तो तब भी मेरे दिमाग में ये थॉट तो था ही, मतलब ये होता है ना कि वो फ्लैशबैक में था ही. रहता है एक. हाँ मतलब आई वाज मोर कॉन्शियस कि भाई हाँ मतलब वो तो ऐसा नहीं था कि डर था तो मैं चलाने नहीं वाला था, लेकिन फिर भी वो अवेयरनेस थी. और मेरे कजिन ने भी मुझे 2 बार कॉल किया कि भाई तेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ तू सही सलामत पहुंच गया, क्या हुआ कैसे. तो तो उस तरह से मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे डील करते हैं, मतलब जो दो एक्सट्रीम्स को एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं. दो एक्सट्रीम हो या मल्टीपल एक्सट्रीम्स हो या सिंगल एक्सट्रीम हो, इट इज एन इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर अ पर्सन. उसे प्रोसेस करने का वही तरीका है जो किसी भी और सिचुएशन में यू टॉक अबाउट इट. एनी इंटेंस एक्सपीरियंस, द वे टू डील विद इट इज बाय टॉकिंग. देयर इज अ रीजन लैंग्वेज वाज invented, right? That we translate
our experiences into words. Words are the first conditioning. There is a concept in psychology which tells us that we associate to unrelated things, and we then carry them on. Say, for example, if I say rose, okay, in your mind, it will be translated as an image of rose flower. You will not have image of ROSE. All right. So your mind's processing system is imaginative, whereas your communication system is verbal. So when you are experiencing an emotion, it is triggering imaginations in your brain. All that you need to do is translate it into language, communicate about it, talk about it. If talking is not possible, write about it. Instead of thinking about it at the mental level, that is in the form of images, talk about it. You will be able to process your emotions. So to utilize the same example that you gave, Janish, when you were driving back on the same path, expressway, the spot where the accident had taken place, before you reached that spot, that all those images came to your mind as flashback. Okay, that is how our brain operates. What you need to do is replace it with different images. If you don't want to continue to get influenced by them, you replace it with different images. Say, for example, every time there is an unpleasant memory which is triggered from the past, it is usually in the form of images. What you do is you immediately recall something else which is pleasant for you from your past, and you recall it to the greatest detail possible. कि हम यहाँ गए थे तो लाइट कैसी थी, कौन से कलर्स थे, सिचुएशन क्या थी, कहाँ बैठे थे, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन क्या था, टेस्ट सेंसेशन क्या था, टच सेंसेशन क्या था, क्या सुन पा रहे थे. So you connect with your sensory inputs and go to maximum details for a pleasant experience. When you do it a number of times, you are able to create different neural networks which are then not effectively creating an emotional state within your mind. Right. So there are two ways of coping with it. One is talk about it, and second is replace a negative image with a pleasant one. Every time you recall a negative image from the past, immediately recall another pleasant memory from your past. Right. You know why? Yeah. How it is effective? Because in our brain, when you're recalling a past or when you're visualizing a scenario, same areas are lit up. Same areas in the brain are activated. Okay. आपने जो अभी बोला ना टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, मतलब जो भी है एक्सट्रीम या कुछ भी, तो मतलब मेरे साथ ये बेनिफिट हुआ, मतलब इस सिचुएशन का, कि ये मार्च 2018 में हुआ था ये इंसिडेंट. फिर उसके बाद अप्रैल में मैंने देखी अक्टूबर, उसका थीम भी यही था. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग, मतलब वो नेचुरली प्रोसेस हुआ कि उसके बाद टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई स्टार्टेड राइटिंग. तो वो अभी तक वो नेचुरली चल ही रहा है कि अभी भी मुझे जो भी मेरे थॉट्स आ रहे हो तो मैं इजीली उसको एक्सप्रेस करने के लिए आई यूज राइटिंग एज अ टूल. तो वो बेनिफिट हुआ कि जो भी सिचुएशन का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था वो इस तरह से मुझे हेल्प बेनिफिट कर गया कि जहां पर मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ. तो उसके लिए मतलब जो भी एस्पेक्ट है उसको सबको, मुझे जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, उसको अच्छे से मैं एक्सप्रेस करने के लिए फिर मैं राइटिंग को मैंने यूटिलाइज किया. तो ये बात आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. Yeah, I think you are just expressing what is inside us, and that's what most of the people or artists they do. That they express everything what is inside them as a fear or anything,
in the form of either writing or drawing or movies or any way. He just express it somewhere. Yeah. आप मुझे आर्टिस्ट बोल रहे हैं, थैंक यू. आप यार इतना अच्छा लिखते हो. It's an art, right? Writing is an art. To grab attention of people while writing is an art. So yeah. हाँ, मतलब ये बहुत ही मतलब I would say कि ये this is one of the most powerful podcast episodes we have ever recorded. I'm so captivated with the amount of things we are talking about. मतलब मैं चाहता हूँ कि ये कभी end ना हो, लेकिन we have certain time limit और मतलब पल्लो को भी वहाँ का टाइम, डे टाइम अलग है, नाइट टाइम अलग है, उनको भी कल ऑफिस जाना है, आपको भी, आपके भी क्लाइंट्स होंगे, तो हम यहीं पर ये पॉडकास्ट एपिसोड को एंड करेंगे. होप टू सी यू सून विथ अनदर टॉपिक. So to all those who are watching this or listening to this podcast, if you need any kind of psychological help, you can go to Swayam for Uncluttered Mind. Wow, you remember it, Janish. Wow, thank you. And to all those who are watching or listening to this podcast, do like, share, and subscribe to our episode. Do check out our YouTube channel and do follow us on various social media platforms. If you need any kind of marketing help for digital platforms, you can reach out to RipScript. And if you want anything related to immigration, Pallav is here to help. So thank you Pallav for joining us today, and thank you very much, ma'am, for giving us so much of precious content in the form of podcast. Thank you very much for that. You're most welcome. Thank you, You're ma'am. most welcome. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Yeah. Well, Bye. I will say this. Congratulations for conducting this. Thank you very much for giving me this platform also, and for carrying out such a wonderful work. Thank you. We hope to continue doing this, and we hope to bring out many more episodes like this, which can not only captivate our audience, but also captivate us. So thank you very much for watching and listening to this podcast. Good night, good morning, good afternoon, whenever or wherever you are listening to this podcast. Yeah, take care. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.